Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. Today, we are going to start our chapter 3, which is input and output devices. So, let's learn about them in this chapter. The name of our chapter is Input and Output Devices of a Computer, and the topics which we will discuss are input devices, output devices, and storage devices. Before that, we have an amazing thought, which is mistakes are proof that you are trying. Let's start. There is a girl who says, "Hello Mayank, do you know computer is a system of many devices working together?" And then he says, "Yes, Kavya, the main device of a computer are input, output, and storage devices." Then he says that let us recite the poem together to know more about computer devices. Input, output, storage unite, data flows day and night. Now we have an activity which says circle the correct picture in each row. Keyboard, speakers, printer, and then we have monitor. मूविंग फॉरवर्ड, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है. कंप्यूटर डिवाइसेस आर पार्ट्स जो अटैच होते हैं हमारे कंप्यूटर से टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. कंप्यूटर डिवाइसेस मेनली डिवाइड होते हैं इनटू थ्री ग्रुप्स विच इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. Let's understand about input devices. So, the devices through which the computer takes the input, ऐसे devices जिनसे हमारा कंप्यूटर input लेता है उन्हें बोला जाता है input device. Let us learn about more important input devices. सबसे पहले होता है कीबोर्ड. तो कीबोर्ड is the main input device of a computer. कीबोर्ड कंटेन करता है small buttons जिनको कीज बोला जाता है. इनको हम यूज करते हैं फॉर टाइपिंग एंड गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर. स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास 104 कीज होती है एंड दिस इज आवर कीबोर्ड. There is a fact which says for every 10,000 words typed, your fingers would have traveled slightly more than a kilometer. Now mouse help us to click and select objects on the monitor screen. माउस मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या ओपन करने के लिए ऑन द स्क्रीन. ये हमारी मदद करता है टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर. इट हैज 2 or 3 buttons. एक एरो शेप का फिगर आता है हमारे डेस्कटॉप पे मॉनिटर स्क्रीन पे जिसको बोला जाता है माउस पॉइंटर जो मूव करता है विद द मूवमेंट ऑफ द माउस. माइक्रोफोन ये एक स्मॉल डिवाइस होता है जो रिकॉर्ड या फिर पास करता है डिफरेंट साउंड्स. वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन. स्कैनर एक यूजफुल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए जैसे इमेजेस, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स और फिर कन्वर्ट करते हैं उनको टू अ डिजिटल फॉर्मेट. इट इज अटैच टू अ सीपीयू विद अ वायर. फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस. ऐसे डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देते हैं यानी कि फाइनल रिजल्ट जो होता है वो डिस्प्ले कराते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल. पहला होता है मॉनिटर. ये मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का. ये डिस्प्ले करता है जो भी काम हम अपने कंप्यूटर में करते हैं विद इट्स रिजल्ट. ऑल्सो हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं. हम इस पे मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं ऑन द मॉनिटर. 3 टाइप के मॉनिटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यानी कि टीएफटी मॉनिटर, liquid crystal display LCD monitor and cathode ray tube which is CRT monitors. Now next is printer. Printer एक important electronic device होता है जिसको हम use करते हैं to print the text or picture on paper. The output on the monitor, हमारे monitor पे जो भी output होता है ये उसको print करता है और उसको बोला जाता है soft copy जो monitor पे दिख रहा है. एंड जो पेपर पे आ जाता है प्रिंट आउट उसको बोला जाता है हार्ड कॉपी. Nowadays, 3 types of printers commonly used होते हैं which is laser jet printer, inkjet printer and dot matrix printer. कुछ printers print करते हैं डेटा को in black and white, hence are called black and white printers. और कुछ होते हैं जो print करते हैं text या pictures को in color and hence are called color printer. नेक्स्ट है स्पीकर्स. स्पीकर्स को हम यूज करते हैं टू लिसन म्यूजिक, सॉन्ग्स, हियर साउंड इफेक्ट ऑन अ कंप्यूटर. और प्रोजेक्टर होता है जो डिस्प्ले करता है रिजल्ट एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे. दिस स्क्रीन इज नॉट लाइक कंप्यूटर मॉनिटर. ये जो स्क्रीन है ये कंप्यूटर मॉनिटर की तरह नहीं होती. ये स्क्रीन कोई वॉल हो सकती है, कोई व्हाइट शीट हो सकती है ऑन द वॉल. एंड इसका यूज करते हैं हम जब भी हमें रिजल्ट देखने होते हैं, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिखाना होता है एट द सेम टाइम. Let's do an activity. Label the input and output devices in the picture shown below. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्पीकर्स हैं. स्पीकर्स क्या हैं? आउटपुट डिवाइस. दिस इज अ प्रिंटर. तो ये प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस.
मॉनिटर इज एन ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है। लाइक दिस यू विल कंप्लीट ऑल द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स गिवन। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सीडी और डीवीडी, सीडी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी होता है डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों ही सिमिलर होते हैं, सिमिलर राउंड शेप के होते हैं। जो सीडी और डीवीडीज है इनको हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं डेटा, म्यूजिक, मूवीज एंड इंफॉर्मेशन। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक स्मॉल डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। There is a fact which says UPS stands for uninterrupted power supply and it is also an important part of a computer. UPS सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी जब भी हमारे कंप्यूटर को, जब इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। Let's revise the chapter. Computer devices are the parts that can be attached to a computer to do different types of work. जो कीबोर्ड होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स जिनको कीज बोलते हैं। माउस हेल्प्स अस टू क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स such as images, text objects and convert it to a digital format. Output on the monitor is called soft copy. Pen drive is a small device which can store large amount of data and information. Let's do another exercise. First is tick the correct option. Computer devices are mainly divided into three parts. Computer mouse help us to play games, draw pictures, both A and B. Keyboard is used for typing. Inject is a type of printer. Which part is also known as VDU, Visual Display Unit, monitor. Let's do fill in the blanks of the chapter. Dash displays all the work, monitor. एरो शेप फिगर जो अपीयर होती है मॉनिटर स्क्रीन पे उसको बोला जाता है पॉइंटर। डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव। प्रिंट टेक्स्ट ऑन पेपर, प्रिंटर। द आउटपुट डिवाइस, the output displayed on the monitor is also called soft copy. Let's do the full forms of these words. First is VDU, visual display unit. CPU, central processing unit. And then we have UPS, uninterrupted power supply. So students, this was your complete chapter about the input, output and storage devices which are connected to our computer and helps us to store the data and information. So do revise your chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.